जैसे आपने कहा, this business just came into your life, your husband introduced you to the business and you decided to go ahead and do it. फिर भी इतनी सिंपली आपने ये अपनी जर्नी हमें बताई है, लेकिन इसके पीछे आई एम श्योर एक अपनी एक स्टोरी रही होगी, राइट? कि देयर वाज समथिंग दैट वाज मोटिवेटिंग यू डिस्पाइट एंजॉयिंग योर रोल एज अ वाइफ, एज अ मॉम। कुछ तो ऐसा रहा होगा दैट वाज मोटिवेटिंग यू। तो क्या था आपका वो बिग वाई व्हिच एक्चुअली मेड यू से दैट आई थिंक टाइम आ गया, आई वांट टू डू समथिंग, एंड वो यही बिजनेस होगा? Yeah, it's just that the freedom which this business gives us, first important thing, like जैसे कि the support, हर हम्म। चीज इतना मतलब like we don't have to spend at most time over here. जैसे कि usually होता है कि if anybody is working from home also, they या have to set the specific time period to do this part of thing. But यहाँ पे ऐसा होता नहीं है. We can manage it. It's by ourselves. That's the beauty of this business. मुझे first thing वही attract किया था. Like when I have a call with my coach, the first coaching call, I was unable to talk also. It's my husband who helped me out. He spoke and everything happened because I was so shy. या I'm so shy to talk with people and all. And that shyness, that has been reduced coming over here. I have learned so many things. And second thing is, my main important thing is the timings. या I don't have to, I don't want to do it today if I'm sick, if my kids are sick, if I have some appointments, I can just skip for today and I can just do it tomorrow. There's not necessary कि मुझे अब ये करना है तो ये करना है. That is the good thing about this business. So true, Naila. And I think that is, ये जो दो चीजें हैं आपने जो highlight की हैं about having that flexibility, having that time freedom, and the ability to make your own choice. These sound like very beautiful words, but technically, if you break it down on a day-to-day basis, these are like so important, especially for moms, especially for parents, and when you have kids, right? Because कई बार होता है हमने day एक तरह से plan किया होता है, and then God forbid there is something else that has happened which we moms did not anticipate. But Correct. when you have a business that's your own, you know that you don't have to worry about कि अब क्या होगा business का. You know that you can parallelly do it the moment you have settled things at home. A very Yes. very strong why, Naila, I must say, and I'm sure इसने काफी लोगों के emotions को भी touch किया होगा इस point ने. बट नाइला, थोड़ा सा तो आप हमें बता ही चुकी हैं कि कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस जर्नी. बट हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे नाइला, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस, ये एक जॉब एक्सेप्ट करने से ज्यादा बड़ा डिसीजन होता है, राइट? बिकॉज व्हेन वी हैव अ जॉब ऑफर दैट कम्स टू अस, तो कई बार इवन इफ वी डोंट हैव एवरीबडी सपोर्टिंग अस और एवरीबडी ऑन बोर्ड, फिर भी चल जाता है बिकॉज यू टेक दैट डिसीजन, एंड इन केस इट्स नॉट वर्किंग आउट, यू क्विट, यू लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी. बट जब एक बिजनेस जैसा डिसीजन आप लेते हैं, स्पेशली इन अ डिजिटल स्पेस, विद ऑल द स्केप्टिसिज्म दैट कम्स विद बीइंग ऑनलाइन एंड ऑल ऑफ दैट, तो सपोर्ट आई थिंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो हम जरूर जानना चाहेंगे नायला कि आपने जब ये डिसीजन लिया, तो आपका सपोर्ट सिस्टम कौन थे, और अब जब आप एक डिजिटल बिजनेस ओनर बन गई हैं, अपनी जर्नी को इतनी ब्यूटीफुली ले जा रही हैं, तो कौन है जो आपको अभी भी कॉन्स्टेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए चीयर कर रहे हैं? प्लीज हमारे साथ शेयर करिए. For me right now, I can say it's like from the first day one to where my husband is there, and over to that, I got beautiful friends in this community. Because me being an introvert, I never speak to people openly. Yeah. Like जाके किसी से बात करना was my not my thing. I never have that confidence to talk to people because being a stay-at-home mom, एक ही like एक circle होता है, kids, house and this. We don't have that much big circle. Like usually लोग जो job करते हैं and they have a circle of friends, they go get up. But for us, it is not like that. It's just the family around. But after joining the business especially, I learned so many things. मेरा confidence boost up हुआ. Like when I am feeling like dull, I just call anybody and I randomly talk to them, and it gets me that boost, that thing to start it again and think in with a fresh mind. Yeah. So वो support जो business में हमें है, like being, I made so beautiful friends in this business. Like I can call them, I can message them anytime, and they are there. There's not it. We just don't talk about business. We talk about everything, and I feel Everything. so lucky to do that, to join this business. मतलब कहते हैं कि like community, like business, usually when we go for jobs also, there is only the environment where we don't be that much free, but here ऐसा नहीं है. Like we talk about everything business, and
personal things also. There's so many things we do it, and this feels very good. That is the thing that helped me a lot. Like my confidence, the way I'm sitting and talking right now also, it was very difficult for me, but now I learned slowly, and this changed me a lot. Anybody, like my people, whoever is watching right now, like jo bhi mujhe nahi jaan, jo they know me, who know me very nicely, they know that Naila is not like this. They know very nicely I am not like this. I cannot sit and talk so nicely with anybody. I'm very quiet and shy person. My God, Naila, I think, by answering that question, you have touched on so many points. Firstly, of course, it's amazing to have support back home because, Yeah, family is always family, right? So, जब yeah, of family course. का आपको वो support मिल जाता है, वो unconditional backing मिल जाती है, तो that is, I think, another level of confidence, another level of, positivity जो आपके अंदर आ ही गई है because family is there. एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आई थिंक हम सबकी लाइफ का होता है हमारे फ्रेंड्स, द सोशल सर्कल दैट वी बिल्ड। एंड आई थिंक मैं अपनी बिजनेस पे अपने पेजेस पे अक्सर अपने ऑडियंसेस को भी बताती हूँ दैट वी आर नॉट अलोन। एक बहुत ब्यूटीफुल ग्लोबल फैमिली मिल जाती है जब आप ये बिजनेस करते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड, फाउंड सम अमेजिंग पीपल। एंड आई कैन सी दैट आप जैसे मुझे बता रही हैं नायला, मैं तो नहीं बिलीव करती कि अगर आप मुझे बताने वाली हैं कि मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी, बात नहीं करती हूँ, Yes. बिकॉज मैंने इसी नायला को देखा है इस बिजनेस में। एंड इट्स अमेजिंग टू सी कि कैसे वो नॉट ओनली द बिजनेस बट द फ्रेंडशिप्स दैट यू हैव फाउंड हियर have also helped you find out or rediscover yourself in a new way. So Surely. that is beautiful. The beauty of this one more thing is that the things which I never know, I was having that in me. I never Mhm. ever think कि अरे हाँ मैं ये कर सकती हूँ, but that I came out in me. I don't know, it was there, but this business has Has got me some other point of view, other part of me that has been shown to me. I was never ever known that अरे हाँ I can do this, I know this. this. No, I was every time in a one box doing this. I know this much only, but yeah, Yeah. things have changed now. Alhamdulillah. Like, that is beautiful. And yes, of course, we are grateful to God that, we found this business at the right time. It is a blessing in our lives. Because, जैसे हम हमेशा कहते हैं, Naila, and I keep telling my audiences, in addition to the fact that we are building something of our own, it is a business, it is a journey. And of course, it's going to be a legacy for our family, for our kids. But uske saath saath, on a day-to-day basis, Bina Naila, this business has given each one of us so much. थिंग्स दैट हम शायद क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, थिंग्स जिसको शायद हम वर्ड्स में भी बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हमें इस बिजनेस में आने के बाद ऑन अ डे टू डे बेसिस मिली हैं। एंड आई एम श्योर आप जब वो आंसर दे रहे थे तो ऑडियंसेस वो खुशी आपके चेहरे पे देख पा रहे थे कि हाउ इट हैज एक्चुअली ब्रॉट आउट थिंग्स व्हिच वर ऑलरेडी विद इन यू, बट शायद इस बिजनेस ने आपको वो एक मौका दिया टू ब्रिंग आउट ऑल दोज थिंग्स जो नायला के अंदर पहले से थी।